गुजरात के खंभात नगर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। नगरपालिक चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया है। खंभात नगरपालिक में भाजपा अब सत्तारूढ़ दल के रूप में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगी। पार्टी के उम्मीदवारों की इस भव्य जीत के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों द्वारा सभी विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी जा रही है। इस जीत के साथ ही नगरपालिक में भाजपा का भगवा लहराया है और आने वाले समय में विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का जोश कम नहीं है। नेकपुर गांव की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और अच्छी संख्या में वोटिंग की। महिलाओं की इस सक्रिय भागीदारी ने लोकतंत्र को और मजबूत करने का संदेश दिया है। प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लहरायो छे संपूर्ण बहुमतीथी अमारी पेनल जीती है। आ पेनल अमारी जीताडवा माटे तमाम कार्यकर्ता भाई बहनों बधानो खूब खूब आभार मानीए छे। अमारी पेनल में एक विद्यार्थीनी बेन हता जेनी आज एक्जाम छे उर्वशी बेननी जेमना मातुश्री आया छे। साईना बेन सामाजिक कार्यकर्ता सौथी वधारे वोटे जीत्या छे पेनल मांथी। हूँ विशाल भाई अने केयूर भाई एम करीने आखी अमारी पेनलनी विजेता थई छे। तो तमाम मतदारों खूब खूब आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आणंद जिल्ला खंभात नगरपालिका सामान्य चूंटणी 2024 જેમાં 9 વોર્ડ હતા, 36 બેઠક હતી। રવિવારે જ્યારે મતદાન યોજાયું ત્યારે 69% જેટલું મતદાન થયેલું હતું અને અત્યારે મતગણતરી પૂર્ણ થઈ છે। મતગણતરી પૂર્ણ થવાના અંતે 22 બેઠક ભારતીય જનતા પાર્ટી, 13 બેઠક ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અને 1 બેઠક અપક્ષ એમ થઈ અને 36 બેઠકની મતગણતરી પર વિજેતા ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવેલા છે અને કોઈપણ પરિણામ વખતમાં કોઈ પ્રકારનું રીકાઉન્ટિંગ માગવામાં નહોતું આવેલું। ઓરલી એક જગ્યાએ વોર્ડ નંબર 7માં રીકાઉન્ટિંગ માગેલું હતું અને એમને ફરીથી ઈવીએમ બતાવવામાં આવેલા છે, જે બાબતે એમને સંતોષ હતો। અન્ય કોઈ રજૂઆત આવેલી નથી અને મતગણતરી શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે। નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 7 એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગૌરવ પરંપરાગત વિધાનસભા, લોકસભા કે નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં પણ સારા મત મળે છે। આજે મારી પાસે 3 ઉમેદવાર જે થયા છે, હરેશભાઈ રાણા ખૂબ ઓછા મતે જે હાર્યા છે એનું પણ એક દુઃખ છે, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદીના વિચારોને લઈને નગરપાલિકામાં પાયાના પ્રશ્નો હલ થાય એવા કાર્ય કરીશું। ભારત માતા કી જય।